फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्री रॉड्स, बहुत गंदा वन प्रॉब्लम है. Three rods made of the same material having the same cross section area but different lengths 10 cm 20, ठीक है. Joint is shown. The temperature of the joint is, so ये 10 20 30 है और टेम्परेचर में दिए हुए whatever, ठीक है ना. तो फिर इससे तुम हीट फ्लो कैलकुलेट करके वो जीरो हो जाएगा whatever. तो सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शन, या ओके कूल. सो हीट फ्लो कितना रहता है? it's just the conductivity, which is like, okay, so conductivity times area upon length times delta T, right? That's the heat flow rate. So suppose इसका टेम्परेचर T है जॉइंट का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा फिर? KA upon L, राइट. सो अपॉन L ये तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है. सो जस्ट वांट डेल्टा T upon L, उसका सम इक्वल टू जीरो. सो पहले क्या रहेगा? T minus 20 अपॉन ये लेंथ कितनी है? 20. सो मैं इसको 2 ले रहा हूँ प्रोपोर्शनली. और फिर क्या हो जाएगा? T माइनस ये चीज़ कितनी है? 30 अपॉन 3 एंड देन प्लस T माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू जीरो, राइट. तो ये क्या है? T टाइम्स 1 अपॉन 2 प्लस, हाँ ठीक है ना. तो फिर 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 दैट्स इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 3, राइट. सो T टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ये? सो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट. तो ये हो जाएगा T टाइम्स 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, यानी कि 11 T is equal to 18, यानी T equal to 18 upon 11, those many degrees, which is 1 point something, right? So 1 और 2 के बीच में. This is correct or not? 6 से multiply किया, 6 plus 3 plus 2 of course, right? That has to be the thing. तो वो तो इसमें दिख नहीं रहा है. हाँ, interesting. हाँ यहाँ पे 10 आएगा, sorry, not yeah, okay, that's gonna make sense. So ये 180 होगा ना, राइट. सो 180 अपॉन 11 यानी कि कितना? सो 1 पॉइंट कुछ तो भी रहता है, यानी कि C इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. Two rods of length L to L having quotient of linear expansion alpha to alpha are connected so that the total length becomes 3L. The average quotient of linear expansion of the composite rod is delta T से क्या इंक्रीज होगा? सो पहले रॉड में कितना इंक्रीज हुआ? L अल्फा T, L अल्फा डेल्टा T whatever, और दूसरे में कितना हुआ? 2L. सो दूसरे का 2 अल्फा है, राइट. सो 2 अल्फा and then delta T, right? Same temperature से change हुआ. That's the increase in length upon the total length, which is just 3L, right? So this is going to be just like delta T plus, हाँ ठीक है ना. तो अपने पास ये कोएफिशिएंट देखना है. So 1 plus 4 I think, because 2 times is upon 3 I guess, right? So 5 upon 3, which is C option. Next question. Next अपने पास 3 question, okay. थर्ड क्या है? A metallic object of quotient of cubical expansion, this thing having a cavity. So gamma ये है मतलब कि alpha just to 10 power negative 5 है. Cavity, inside the cavity is partially filled by a liquid of quotient of cubical expansion this much. What percentage of volume of cavity should be filled by the liquid so that the volume of empty space in the cavity does not change with temperature? अच्छा, cavity is now partially filled with liquid of quotient of cubical expansion this thing. So जो जब मैं कंटेनर है उसमें कितना, उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ होगा, राइट. सो 3 into 10 power negative 5 whatever. So 3 times 10 power negative 5 delta T, इतना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में. दैट टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर, राइट. सो वॉल्यूम कंटेनर, ओके. सो जो कैविटी रहेगी उसकी वॉल्यूम कितनी है? सो वॉल्यूम कंटेनर टाइम्स ये सारी चीज माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टाइम्स, राइट. सो फिर क्या चाहिए? What percentage of volume of cavity should be filled? तो इसको x ले लो, इसको 1 ले लेते और इसका x ले लेते. So minus x times, right. So it does not change, right, exactly. So ये कितना है? It's 5 times 10 power negative 5 लिक्विड का, right. तो इतना चेंज हुआ होगा वॉल्यूम में, right, proportional to that much, and this must be equal to 0. yeah. मतलब ये क्या है? दिस इज द कंटेनर की, राइट. मतलब दिस इज द चेंज इन एम्प्टी स्पेस बेसिकली. या दैट शुड मेक सेंस. सो दिस मस्ट बी 0. व्हाट डज दैट मीन? x इज जस्ट इक्वल टू 3/5. तो इट इज परसेंटेज इज लाइक 60%. तो ये होगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ. Monoatomic gas undergoes a thermodynamic process. P squared is equal to C times T, where C is a constant. Molar heat capacity of the gas for the process is, right? No big deal. So P square times T power negative 1 is equal to some kind of constant, right? अब देखिए molar heat, right? तो इसका मतलब क्या हुआ?
अपने को वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा. सो लाइक पीवी को बनाना टी पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टी इज सो टी इज बेसिकली लाइक टी या 1 अपॉन पीवी हो जाएगा ना ये चीज. सो यू नो पी अपॉन वी बेसिकली दिस केस दैट सम काइंड ऑफ कांस्टेंट व्हाटएवर. So PV power -1 is some kind of constant. So molar heat capacity R upon gamma minus 1, which is like CV whatever. So CV and then minus R upon x minus 1. So ये x है -1 ये 2 हो जाएगा. So like plus R upon 2 basically. CV कितना होगा और कौन सी टाइप की गैस है ये? मोनोटॉमिक. सो लाइक 3 अपॉन 2 R दैट CV. सो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 R यानी कि 2R इज द molar heat capacity of the gas. So B is the answer. Next question. Fifth क्या है? Temperature of a body decreases from 20 to 27 point something in 10 minutes when the body is kept in surrounding. So क्या हुआ 28 से 27.8 in 10 minutes when the body is kept in surrounding temperature 27 degrees Celsius, right? Okay. Now the temperature of the same body is raised to 329 and it's kept in surrounding of 327. Okay, assuming that the body follows Newton's law of cooling, its temperature after 5 minutes will be. ठीक है ना? So no big deal. Right, so 28 to ये चीज in 10 minutes when the body is kept in a temperature, okay, in a surrounding of 27. So with 27 कितना है 1 degree Celsius से basically change हुआ 0.8 में. For that you require 10 minutes और you know कैसा होने वाला है ये. So with respect to that अगर मैं yeah it's proportional. So जो rate है decrease होने का that's proportional to the thing. So it's like first order kinetics, right? Yeah. What can you say? जो delta T रहेगा so the difference from the surrounding temperature. So d by dt of that thing that's equal to negative k times delta t. So k is just some kind of constant. So basically क्या बोल रहा हूँ मैं? Delta t is e power negative something. So initially कुछ तो भी होगा a and then e power negative kt, right? So initially t equal to 0 पे a है and then उसके बाद में decrease होने वाला ये yeah that's the thing of course. So इसको इसमें अपन यूज कर सकते हैं. yeah अभी क्या हो रहा है 1 से 0.8 में क्या तो 0.8 इज इक्वल टू ई पावर नेगेटिव के टी. सो ई पावर नेगेटिव के टाइम्स कितने 10 मिनट्स. सो अब ये सब कुछ मिनट्स वगैरह में राइट. सो दिस टाइम्स 10 आई गेस दैट्स गोना डू द थिंग राइट. और नहीं क्या चाहिए अभी क्या टेम्परेचर है 327. सो कितना यानी 2 डिग्रीज का डिफरेंस है ना राइट. सो 2 डिग्री टाइम e power negative k times 5 अपने करना पड़ेगा. So 5 minutes. Yeah. So that's going to be just square root of this guy. So 2 degrees square root of 0.8 or something. Isn't that correct? Of course, I guess that should be the correct thing. So square root of 0.8 जो भी होता होगा. Yeah, I mean, right. Fine, of course. And then this thing plus body. So ये temperature 327 plus this guy, right? तो ये कितना होने वाला है 2 डिग्री टाइम्स स्क्वायर ऑफ 0.8. वेल थिंक अबाउट इट 0.8 किसके पास 0.81 या 0.9 अप्रोक्सीमेटली. 0.9 का स्क्वायर क्या होता है 0.81 राइट. तो दिस टाइम 0.9 आई वुड से. सो 1.8 मतलब कि 328.8 और समथिंग. तो वो किस आंसर में सी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 6th मारो सब लोग. 6th क्वेश्चन 6th कितना है ओके. Two rods A B of length something. So LA is 3L लिखना पड़ेगा. A B length बताई है length है 3L and 2L. Okay. Connected in series and a third rod C of length 5L. So A और B जो है वो सीरीज में है. Okay. Connected in parallel with a combination of A and B. So ये A है फिर ये B है and then ऐसा C यहाँ पे अटैच किया हुआ है राइट. Okay. और क्या बोला है their thermal conductivity is under the ratio K. Okay. So this is 4K. KB is 3K. और KC का कुछ बोला नहीं है. रॉड C के कंडक्टिविटी क्या है अपने को वो ढूंढना है. सो इसको मैं XK बोल देता हूँ whatever. Cross section area of all are same. Okay. What is the thermal conductivity of rod C if rate of heat of what if rates of heat conducted across A and C are in the ratio 3:2. तो मतलब यहाँ पे जो है हीट फ्लो कितना हो रहा है 3 और यहाँ पे कितना हो रहा है 2. इसको मैं 3H और 2H बोल रहा हूँ राइट. सो इनका कॉम्बिनेशन 3H रहेगा और इसका जस्ट 2H रहेगा. वी नो दैट हीट फ्लो. सो इसके थ्रू हीट फ्लो रेट है ये सीरीज में है ना बेसिकली. हाँ ठीक है बट कंडक्टिविटीज रहे ओके. इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस दैट्स द सेम थिंग. सो
Yeah, heat flow rate same है, right? It's as if you are adding, yeah, like okay, conductivities are almost like 1 upon the resistivities, you know. So yeah, इसकी total conductivity कितनी रहेगी? तो अपने को conductivities दी है, just figure out the resistances or something. तो conductivities are like, okay, sorry, conductances k times l, sorry, k upon l रहता है ना, k a upon, हाँ ठीक है. So वो किस रेशियो में है? 4 upon 3, this is 3 upon 2 and this is 5 upon x. ये कंडक्टिविटी, सॉरी, कंडक्टेंसेस है, सो उसको जी बोल देते हैं, व्हाटएवर. तो कंडक्टिविटी किस रेशियो, सॉरी, रेजिस्टेंस किस रेशियो में रहने वाला है? 3 अपॉन 4, 2 अपॉन 3 एंड देन x अपॉन 5, राइट? ऑफ कोर्स. सो क्या करूं मैं? 20, ओके, गॉट टू मल्टीप्लाई बाय 60 ऑफ कोर्स. सो दिस इज इन द रेशियो 60 से मल्टीप्लाई क्या भी करेगा? 15 टाइम्स 45, यस. और यहाँ पे रहेगा 4 टाइम्स लाइक 20, 40, और ये होगा 12x. ओके, दीज आर हाउ द रेजिस्टेंसेस आर. चलो ए और बी में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मिला के? क्या 95? ऑफ कोर्स. सो 95 इज कोरिलेटेड विथ या कितना? सो लाइक 1 अपॉन 95 अपॉन 1 अपॉन, इसका रेजिस्टेंस कितना है? जस्ट 12x है, राइट? दिस थिंग इज व्हाट दी कितना करंट का रेशो हो गया. ऊपर का करंट क्या है? ए के थ्रू, ए के थ्रू 3 है और इसके थ्रू 2 है, सो 3:2 आई गेस. मतलब कि 12x अपॉन 95 इज जस्ट इक्वल टू, या 3 अपॉन 2 आई गेस. सो इसका मतलब है कि ये 3 तो गया है, तो 4 हो जाएगा. 8x इज इक्वल टू 95, x इक्वल टू 95 अपॉन 8 होपफुली, विच इज 1, एंड देन 15 के लिए क्या जाएगा? 1, फिर वापस 7 के लिए 0.72 अप्रॉक्सिमेटली ले लेते हैं. लाइक इट्स गोना बी 9, सो 12 क्या अराउंड होना चाहिए. या अच्छा, तुम्हें डायरेक्टली दिया है, ऑसम. बट ये तो 95 नहीं, ये तो कुछ तो और आ रहा है. ये तो doesn't make any sense. It's 12 over here. Ooh, right, that's not correct. Okay, thermal conductor, God, upon 17. What? Something's not right about this. Uh, correct with parallel, of course. लेंस अपने को करेक्ट अपन ने नोट डाउन की होगी. यस, दिस इज 4 3 एंड ये अपने को x, राइट? लेंस क्या है? इसका 5 है, इसका 3 और 2 है, राइट? सो जो कंडक्टेंस है वो रेशियो में रहने वाले हैं 4 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन, ओह गॉड, ये x अपॉन 5 था, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, राइट? या सो अब जब मैं उल्टा करूँगा इट्स गोना बी 5 अपॉन x ओवर हियर. तो अब मुझे यह प्रॉपर्ली करना पड़ेगा. दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, बट एनीवे व्हाट वी आर डूइंग इज कि इन दोनों का रेजिस्टेंस अपन ऐड कर सकते हैं. सो यू नो, राइट, इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, 3/4 प्लस 2/3 और अपॉन इसका रेजिस्टेंस सी का 5 अपॉन एक्स, दैट्स गोइंग टू बी 1 अपॉन करंट, राइट? उनका रेशियो. तो करंट्स क्या है? 3:2 is like 1 upon 3 upon 1 upon, which is 2 upon 3 बेसिकली. इसका मतलब क्या हुआ? और ये 2 अपॉन 3 था ना, ये क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, इट्स अ थिंग. तो 3 अपॉन 2 करने से भेज सकते हैं. दैट्स गोना बी लाइक 3 अपॉन 2 टाइम्स 3 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, आई गेस. तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, मतलब कि 17 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स. So x will just be 8 times 5 is like 40 upon 17, which is, so A answer. Next question, 7th. Seventh question. Seventh is two solid metallic spheres S1 S2 are made of the same material and have the identical surface finish. Mass of S1 is 3 times that of S2. Both spheres are heated to the same surface finish same है. सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश, मास ऑफ S1 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ S2, ठीक है? सो S1 S2 इनके मासेस किस रेशो में, मतलब इनके R क्यूब किस रेशो में? S1 का 3 टाइम्स है S2 से. ओके, बोथ द स्फीयर्स आर हीटेड टू द सेम हाई टेम्परेचर, सो टेम्परेचर सेम है इन दोनों का, राइट? एंड प्लेस्ड इन द सेम. तो R किस रेशो में रहेगा? क्यूब रूट ऑफ 3 एंड देन 1 इस रेशियो में. सो आर स्क्वायर इस रेशियो में रहेगा 3 पावर 2/3 और 1, राइट? इस रेशियो में रहने वाला है. सो दैट्स सरफेस एरिया का रेशियो. ओके,
same high temperature and then placed in the same room with having lower temperature but thermally insulated from each other, then the ratio of the initial rate of cooling of S1 to that of S2 is right. So we know that surface area से proportional रहता है सब कुछ, right? Because वो T same है, so cool. मतलब कि बाहर कंडक्शन का रेट क्या होने वाला है, सेम एज दिस थिंग, तो इट्स डिवाइड्स बाय द मास. सो ये चीज अपॉन यानी कि 3 पावर नेगेटिव 1/3:1, मतलब कि 1:3 पावर नेगेटिव 1, 3 पावर पॉजिटिव 1/3. दैट्स द रेशियो ऑफ कूलिंग. सो डेल्टा टी या dt अपॉन dt negative, right? That's the thing, that's the rate of cooling. So क्या है, S1 is to S2, that's going to be 1/3, so 1/3 root of 3, I guess, not square root. It's not supposed to be square root, it's supposed to be ठीक है, तो D is the answer. Next question. अरे यार क्या हो रहा है इसमें. Next question. Hollow spheres नहीं है ना, solid metallic spheres है. Cool. Eighth is two identical containers A, B are fitted with frictionless pistons, contain the same ideal gas and at the same temperature and same volume V. Okay. Same ideal gas. अभी तो पूरा identical है. Same temperature, same volume. Their masses are of the masses of the gas A is Ma and that in B is Mb. So moles अलग अलग है, right? The gas in each container is now allotted to expand isothermally to the same temperature to V. Sorry, same volume to V. The change in the pressure. अच्छा ठीक है. Initially क्या है, volume same है, V temperature same है, right? So P equal to nRT, मतलब कि P is proportional to V basically because throughout temperature same रहने वाला है. Yeah, okay. And उसके बाद क्या बोला था, gas in each case is now expand isothermally कर रहे, okay, to same volume to V. तो इसका प्रेशर डबल हो गया, इसका प्रेशर डबल हो गया, राइट? हाँ ठीक है. द चेंज इन द प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी आर फाउंड टू बी डेल्टा पी एंड 0.5 डेल्टा. ठीक है. तो मास इसका अपने को रेशियो लेना है. ऑफ कोर्स डेल्टा पी एन से भी प्रोपोर्शनल रहने वाला है, राइट? सो 2 टाइम्स ऑफ वॉट एवर इनिशियल प्रेशर वॉज. सो वो है रिलेटेड मास ए से. So this is proportional to delta P, or what you're saying is that 2mb is proportional to delta, so 1.5 delta P basically, right? So moles जो है, yeah, we get that mb is just equal to 1.5 ma, right? So A is to B है ना ये, of course. So there we go. Just means like 2mb is equal to 3 ma. ठीक है, तो वो कौन सा इसमें है? C option. Next question, 9th. 9th is the ideal gas is expanding such that Pt power, ठीक है ना? So T is equal to क्या? So T is proportional to PV, I would say. इसका मतलब क्या हो गया कि P cube V power 2 is some kind of constant, मतलब कि P की power PV की power 2/3 is equal to constant. Question of volume expansion of the gas is what? Volume expansion coefficient, मतलब with respect to what? Question of volume expansion. Oh, okay, yeah, like, okay, I get it. It's just delta V, like, okay, dV upon dt and that thing upon V, right? That's the quotient of volume expansion. I get it. अपने को बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रेशियो देखना पड़ेगा. Yeah, that's the thing. So वो अपन देख सकते हैं. So like P is basically T upon V, तो ये हो जाएगा T cube upon V, some kind of constant, right? Isn't that correct? Yeah, of course. What else? So क्या हो गया ये t cube, right? मतलब कि v is proportional to t cube basically. Isn't that right? So let's just say v equal to kt cube. Who cares? So dv upon dt, that's going to be like 3kt square. Okay. And I think upon v is just kt cube. तो ये तो गया. Which is going to be equal to 3 upon t. So 3 upon t is the answer. C is the correct answer. Next question. 10th. 10th is an ideal gas is taken through a series of changes to figure total work done by the gas at the end of the cycle is equal to by the gas at the end. तो पहले क्या हो रहा है? Okay, पहले इसका like volume increase हुई, so ये एरिया जो रहेगा इसका पॉजिटिव. ओके, फिर हाँ ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव एरिया रहने वाला है, इसका पॉजिटिव वॉट एवर at the end of the cycle is equal to total work done. Yeah, no big deal, just find out the area. So half of कितना बेस है ये? So P2, okay, वॉल्यूम कैसे कैसे चाहिए? V2 to V, 2V is the base, right? V2 3V जा रहा है और प्रेशर कहाँ से कहाँ जा रहा है? P2 4P, so like that times 3P should you think. So 3PV मतलब कि आंसर है C. नेक्स्ट क्वेश्चन
11th is if the molar heat capacity of a gas in the process Pt equal to constant is 5R, right? Okay, ठीक है, molar heat capacity. So once again, T में like okay, T is proportional to PV is like P squared, V is some kind of constant, PV की power 1/2 is equal to constant, right? Or right, and what kind of gas is this? अच्छा अपने को degree of freedom ढूंढनी है, right? So like F/2 times R, that's CV for you minus R upon x minus 1, of course. X is just 1/2 minus 1. This will be negative 1/2. You just plus R upon 1/2, which is like 2R basically. Yeah. Of course. And that is equal to what? 5R. मतलब कि क्या? 3R is equal to F/2R. F/2 is equal to 3. F equal to 6. So C is the answer. Next question. Unless of course इसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को देखने वगैरह वो भूल जाओ. ठीक है जो. Next. राइट मतलब सिर्फ रोटेशन और काइनेट और ट्रांसलेशन से अपन कर सकते हैं ना 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो नो बिग डील. नेक्स्ट 12 करना पड़ेगा फिर. Okay, the internal energy of an ideal gas is related as U is equal to this thing. Okay, whatever. P is the pressure of gas, V is the volume of gas, A, B are constants. Sorry. Okay, for an adiabatic process, gamma will be. So internal energy अपने को दी है and for an adiabatic process, so अपने को heat नहीं दी, मतलब कि du is just equal to negative P dV basically, right? So work done is equal to the change in energy, right? ओके अपन du निकाल सकते हैं इजीली. और ab क्या है? ab आर कांस्टेंट, सो d है तो मर गया. ओके जस्ट b एंड देन d टाइम्स या b ऑफ pv is going to be like p dv plus v dp. That's going to be equal to negative p dv, right? So right, and what's gamma? So gamma is like, okay, this is kind of complicated. It's an ideal gas. What is this thing? Hey, okay, ये इतना बुरा नहीं, just like b times n times, okay, nprt, isn't that the thing? So right, okay, b is like that degree of freedom upon 2 type की जो चीज है ना. Yeah, okay, so b is just right, okay, degrees of freedom upon 2. That's the thing, sure. So for an adiabatic process, it's gonna be like, right, what's the gamma? Of course, haha, yeah, that's the thing. So you know the thing, right? It's like F/2 plus 1 upon F/2. That's what the gamma will be, which means कि b plus 1 upon b होने वाला है, which is like 1 plus 1 upon b. So no big deal, huh? Yeah. So oh come on, इसमें a क्यों डाल दिया इन लोगों ने? It should just be this guy. और यहाँ पे a क्यों डाला इन लोगों ने? Just think about a delta u, right? फर्क नहीं पड़ता इनिशियली क्या एनर्जी थी इसमें. It must be this. और वो कहीं है नहीं. None of these. So D is the answer. What can I even do about this? Yeah. Right. Yeah, gamma must be this thing. There's no escaping it. It must be 1 plus 1 upon B. That's not here. Next question. Because A जो है, that doesn't actually matter at all, right? फर्क नहीं पड़ता बेस एनर्जी कितनी है, right? कैसे चेंज हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम, दैट मैटर्स. सो जिसे भी A है वो सब काम के नहीं है. Just move on. 13th is the student records Q delta U delta W for thermodynamic cycle A to B to ये क्या चीज है? Box C to box A. Fine. Okay. Correct entries are missing. Find the correct entry in the following option. So अच्छा A B मतलब A to B, right? Okay. A से B, फिर B से C, फिर C से वापस A, right? Okay. और उसके लिए अपन ने डेल्टा क्यू रखा. फाइन. So डेल्टा W total work done. Okay, that can be positive or whatever. डेल्टा Q अपने को ऐसा दिया है और डेल्टा U अपने को ऐसा दिया है. Like this is just 50 joules. हाँ, interesting. Certain entries are missing. क्या मतलब ये तो बहुत ही अजीब हो गया. Because right, okay, so like total heat plus total delta, right, delta U must just be 0 and whatever. अच्छा AB में क्या हो रहा है? डेल्टा W को दिया हुआ है एंड डेल्टा Q भी दिया है. So just फिजिक्स है ये. डेल्टा Q is heat. Okay, so delta W is work done by the gas, right? तो अपने को एक्चुअली नेगेटिव देना है इसका, मतलब कि डेल्टा U, ठीक है, अपन इसको कंप्लीट करते हैं, राइट? 3 चाहिए रहेगा ना अपने को, व्हाटएवर. सो पहले क्या है? W, फिर डेल्टा U एंड देन Q, राइट? ओके,
सो ए बी में क्या हो रहा है, ये 40 है एंड दिस थिंग इज जस्ट 150, इट्स सपोज टू बी 110 आई गेस। और बी सी में ये पता नहीं है, इट्स जस्ट 50 लाइक दिस। हाँ ये तो ईजी है, तो अपन कर लेंगे, नो बिग डील, जस्ट 10 सॉरी। सो यू नो right, जो वर्क डन रहेगा like okay delta u is 50 and do we really have to do this thing, q minus w is equal to delta u, I know this is just work done is equal to q minus delta u I would say। so ये हाँ ठीक है, actually we just have to figure out what delta what w is, right? oh yeah, so q यानी कि ये चीज minus delta u is just that, so minus 40 is the thing। और इसमें क्या है 30 दिया है, या सो इनका एडिशन और इनका एडिशन सेम होना चाहिए, राइट? मतलब वर्क डन इज जस्ट इक्वल, डेल्टा यू मस्ट बी जीरो, राइट? सो इट्स गोना बी जस्ट नेगेटिव 160। और अपन ये ढूंढ सकते हैं, सो क्यू, राइट, क्यू इज जस्ट वर्क डन बाय द गैस प्लस डेल्टा यू ऑफ कोर्स, which is just negative 130, या ओके। तो अपन क्या चाहिए, क्यू बी सी, मतलब सेकेंड इसमें क्यू विच इज दिस गाय, वो तो 10 अपने को दिया हुआ है, वेट व्हाट, क्यू मतलब वो तो सॉरी डब्ल्यू बी सी, हाँ ठीक है, मतलब ये चीज दैट्स गोना बी नेगेटिव 40, दैट्स नॉट करेक्ट। ओके क्यू ए क्यू सी ए, ओके सी ए में ये वाला ऑप्शन नेगेटिव 130, इसमें 130 दिया नॉट नेगेटिव 130, दैट मेक सेंस, हाउ कैन दैट बी? ओके और क्या है, डेल्टा यू ए बी, सो ए बी कौन सा प्रोसेस है, ये वाली, उसमें डेल्टा यू क्या 110, ओके डेल्टा यू सी ए, सी ए दिस प्रोसेस, उसमें डेल्टा यू चाहिए, दैट्स गोना बी नेगेटिव, या सो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th 14th question is an ideal gas expands in such a way that TB power 2 is equal to constant throughout process, then the graph of the process TB is a parabola, whatever TB क्या हो जाएगा, so TB is like proportional to temperature, so TB is yeah it's a hyperbola, so no not a parabola, not a straight line, such an expansion is possible only with heating, uh, okay only with cooling, so heating है कि cooling है कि क्या है, so yeah okay just have to figure out what dq is। we know that dq is just equal to delta u plus, okay you know the thing right, of course, plus p dv, right, of course, so du plus p dv, और du कितना होगा, it's like ncv dt basically, and then that thing plus pd, और कौन सी टाइप की गैस है, आइडियल गैस, या बट what kind of is it, like whatever, and then pdv just have to make that count। so अपने को क्या p और v के बीच में दिया है ना, I guess it's not that bad, right? Maybe it's doable, so you know p is just some kind of constant upon v square and then dv like that। अपने को एक्सपांशन सब कुछ वॉल्यूम के टर्म्स लिखते हो, राइट? सो दिस इज some kind of constant, इसको k बोल देते हैं, दोनों k और c पॉजिटिव होने वाले, this is just so bad and we just want dt first of all, p के जगह nrt लिखते हैं, so nrt times v is equal to वो जो भी constant है c, yeah this thing of course, and we just want what dt is, so t is equal to c upon nr v, so dt will just be negative c upon nr v squared and then dt, उसको इसमें पुट कर देते हैं, इसका भी जस्ट नेगेटिव nr तो कितना लगा, n कट गया, c v अपॉन r, यहाँ पे c आ रहा है, अपॉन v स्क्वायर dv and then you got c upon v square dv, so c upon v square dv कॉमन निकाल लो, which is going to be 1 minus cv upon r, right? और अपने को पता है कि cv है that I mean it at least has a 3/2 value, right? तो ये चीज नेगेटिव है, what does that mean, that dq is negative, so this is only possible with cooling, तो 14 का आंसर d। next question, right, if dv is positive dq must be negative। next 15th 15 is a pv curve for the process where vt curve is, अच्छा ये चीज is, अच्छा ठीक है, तो अपने को दिस इज नॉट नाइस, सो वॉल्यूम टेम्परेचर दिया अपने को, या ओके पहले क्या हो रहा है, C2A में टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग, इट्स लाइक डिक्रीजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा C2A में, राइट? C2A कहाँ पे जा रहा है, ओके सो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर मस्ट बी इंक्रीजिंग, इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, राइट? तो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज तो हो नहीं रही है, C2A वॉल्यूम मस्ट बी डिक्रीजिंग एंड इट्स लाइक अ कांस्टेंट स्लोप, नो PV is constant, some kind of hyperbola, yeah
So C2A pressure decreasing, volume increasing. इसमें क्या है, C2A कुछ अजीब ही है, right? It's not a straight line at all. So A is the one. 16th. ये तो easy है, तो अचानक से अपने आप हो गया. A given mass of gas expands from state A to state B by three paths 1 to 3 as shown in the TV indicator diagram. If W1, W3, W okay are still be the work done by the gas along the three paths, then so ये 1 ये 2 ये 3. अच्छा, सब में डेल्टा यू तो सेम होने वाला है, और by three paths. ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग. टीवी, आई डोंट नो ये कैसा, ये ग्राफ के एरिया में कुछ इंपॉर्टेंस तो है नहीं, राइट? द वर्क डन, वी वांट टू फिगर आउट हीट समहाउ. अगर ये एस डी टी वाला ग्राफ होता है देन यू एस टी का ग्राफ अपन रहता तो अपन कर पाते, बट ऐसा तो है नहीं. सो हाउ डू वी डू इट, राइट? इट्स लाइक वी और टी के बीच में we figure out the work like negative PdV, of course. You can't just figure out the area, unfortunately. तो इसका क्या होगा, A2, right? Okay, throughout that volume constant है, so no work done. और basically ये ग्राफ है, right? Okay, so temperature constant is के throughout this तुम्हारा टेम्परेचर, वो तो ठीक है, डेल्टा यू भूल जाए, तो सिर्फ वर्क डन देखना है. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सो फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ V2 upon V1 इज द थिंग, ऑफ कोर्स. और V2 upon V1 सेम है, बट यहाँ पे जो है टेम्परेचर, राइट, एंड इन दिस एज वेल द सेम स्टफ, बट इसमें जीरो हो जाएगा वर्क डन, राइट? और इसमें क्या हो रहा है, T वर्सेस V इज कांस्टेंट, लाइक प्रेशर इज कांस्टेंट बेसिकली, या ओके. देन द वर्क डन इज, व्हाट्स द वर्क डन? ओके, इट्स जस्ट दैट मच. ओके, वो अपन कर लेंगे, नो बिग डील. पहले क्या हो रहा है, A2, ठीक है ठीक है, एनआरटी V2 upon V1 दैट्स द वर्क डन. सो इसमें T बड़ा है, राइट? सो ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले इसमें जो वर्क है वो बड़ा रहेगा, राइट? डेल्टा यू दोनों में सेम है. व्हाट्स द थिंग, Q is just equal to work done plus plus delta U, right? Of course. Wait a second, we don't even care about what Q is or whatever. हाँ, अपने को सिर्फ वर्क डन निकालना है. What's the big deal about it? दोनों में जस्ट वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रही ना, तीनों में ऑफ कोर्स. सो इसमें वर्क डन ऐसा रहने वाला है, राइट? इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स. और क्या, V2 upon V1 V फाइनल upon V इनिशियल बोल देते हैं. और इसमें सो फर्स्ट में ऐसा हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में जस्ट NR T3. सो जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस थी, इसमें T3 छोटा होगा ना, ऑफ कोर्स. नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है. सो ऑफ कोर्स W1 इज बिगर देन W3, दैट्स वी कैन से फॉर श्योर. W2 क्या होगा, सो इट्स कांस्टेंट it's constant pressure, isn't it? It's going from A to B, right? Oh god, constant pressure is like, okay, we just want integration of P dV. This is constant, it's going to be P delta V basically. So right, P delta V is like delta nRT, isn't it? So you जाएगा nR and then delta T, मतलब T. Yeah, and the temperature, तो यहाँ से यहाँ पे गया है, like okay, this. Of course, ये टेम्परेचर माइनस ये वाला टेम्परेचर, so ये जाएगा nR, then you got T2, right? So T3 minus T1. So जो थर्ड में टेम्परेचर था, oops sorry, T1 minus T3, right? This is the thing, of course. That's just how it's supposed to be. So V1 upon V2, how do you figure that out in terms of temperature, right? Like V1 ऐसा है and then V2 वैसा है. Oh, throughout this pressure constant है, right? So मतलब कि V final upon V initial, that is equal, it's basically inversely proportional to pressure. So it's going to be pressure initial upon pressure final, या फिर wait, pressure constant है, sorry, V is proportional to temperature, it's going to be T final upon, so basically like what, T1 upon T3, और ये जगह T1 upon T3 as well. तो कौन सा बड़ा है इसमें? It's kind of a hard comparison. ये अपन कैसे कर सकते हैं? Yeah, how do we do this thing? Which one of them is bigger? I mean, of course, W1 is bigger than W3, but वो तो हर जगह पे रहेगा, कि E में नहीं, ये तो पूरा घटिया है. God, नहीं, that doesn't make any. W2 इन सबसे बड़ा है. What? So this thing is bigger than both of these? Doesn't make any sense. Natural log है इसमें. T1 minus T3 you are saying. It's like natural log of T1.
natural law. It depends, because it depends कि कहाँ पर है अपन कर्व में throughout. Natural log of T1 upon T3. How does that even make sense? How am I going to do that? I have no idea. कैसे करो मैं इसको? I don't know. I don't know. Shit. या तो A या फिर D. I just choose one of these. I'm gonna say A is maybe the thing. So, you know, yeah, maybe. Because ये इनके बीच में है, so, right, you can kind of think of like bunch of step processes or whatever. Something like that. Next question. 17. I have no idea कैसा होने वाला है, but just move on. 17. This is shown in the diagram. Which of the following curves may represent the same process? The following curves may represent the same process. Okay. So पहले क्या, pressure is constant and then volume is increasing with temperature. T or, oh god, I don't like these kind of diagrams. So A to B line तो नहीं होनी चाहिए. Like P versus B is constant. Like P is okay. Sorry, P is constant and V is changing. Like the temperature is also increasing with V linearly. So TV जो graph रहेगा, right? That's kind of like linear, of course. So C looks correct. और ये क्या T versus P? नहीं, P तो constant है ना यार. And just temperature is volume decrease हो रही है, so temperature will also decrease, of course. This doesn't make any sense. Okay, this is a B versus T. I mean, it's not like that. Okay, P versus T. So A to B may, what is this? No, pressure must be constant. That doesn't make any sense. So सिर्फ C correct है. Next question, 18th. 18th is the ratio of the average transition kinetic energy to rotational kinetic energy of a diatomic molecule at temperature T is. Okay, so average translation energy is like, okay, 3 upon RT के तो हम पता है 3 degrees of freedom है for translation, and it's a diatomic molecule, so rotation energy is if just only 2 degrees of freedom actually for rotation, so इसमें 2 रहने वाला है. So 3 is to 2 I would say, मतलब कि D is the answer. Diatomic molecule 8 degree of freedom खा लिया because वो symmetry and everything. Sorry, क्या inertia 0 है 8 degree of freedom में. Yeah. 19th is a diatomic gas follows the equation PV power n is equal to C. What should be the value of n such that its molar heat capacity during process is R? Okay, and what is a diatomic gas? So R is equal to diatomic के लिए degree of freedom अपन यहाँ पे भी किया है. It's gonna be 5 I guess. So 5 upon 2R plus R upon x minus 1 n minus 1 whatever. So क्या हो जाएगा? 1 is equal to हाँ ठीक है ना 2.5, so like 1.5 is just equal to 1 upon the minus n I would say. तो n जो है it's kind of fraction में आने वाला है. So 1 minus n is just equal to 1 upon, ठीक है ना 2/3, because this is 3/2 इसका ratio. ठीक है, तो n is just equal to 1/3 I would say. And where is the thing? 1/3 है ही नहीं इसमें. What? Wait, something went wrong? हाँ, something went wrong. It's supposed to be negative. So like ये तो गलत हो गया अपना. What's this gonna be? 1 upon n minus 1. That's equal to e minus 1 is like 3 upon 2. So n minus 1 is just equal to 2/3. N is equal to 5/3. Hopefully मैं ऐसे mistakes नहीं करूँगा. So C is the answer. 19th हो गया. 20. 20 is a diatomic gas follows the equation. Sorry, an ideal gas undergoes the process 1 to 2 as shown in the figure. The heat supplied and work done in process is delta Q and delta W. Ratio delta Q is to delta W is. So 1 to 2 process जा रही है, right? Okay. Heat supplied and work done, ठीक है. Delta Q is to delta W. So V versus T is kind of a constant. Okay, pressure constant है, right? Okay, pressure is constant, and then delta Q is just equal to delta H, isn't it? Of course. And what's delta W? Delta W is the work done. Physics है नहीं. So work done by the gas. That's going to be no. So it's like Q minus W is equal to delta U in this case. So basically, W is just equal to Q minus delta U. मतलब कि this is just delta H minus delta U, right? Because you know the thing, pressure constant है and everything. So right, मतलब volume versus temperature constant है ना. So that's the thing. Cool. But delta H upon delta U is just gamma. So it's like gamma is to gamma minus 1, I would say. That is the process. Yeah, so A is the answer. Next question. 21.
21, क्या पता कितना टाइम हुआ होगा अभी. 21 is a diatomic gas is heated at constant volume until the pressure is doubled and again heated at constant pressure until the volume is doubled. The average molar heat capacity for the whole process is. Okay. So initially क्या है P naught T naught है. It's a diatomic gas, right? So our degrees of freedom is just 5, I would say. Okay. क्या हुआ पहले तो is it at a constant volume until pressure is double. So 2P naught, 2T naught and V naught. ये ऐसा हुआ. उसके बाद में क्या and it's again heated at constant pressure until the volume is double. So इसका 2P naught अब 2V naught and then 4T naught हो चुका है. Right. The average molar heat capacity for the whole process is. So इसमें heat क्या है? इसमें heat produce कर रही है. So it's constant volume, work done zero है, just you know like NR. Oh god, ये तो काम नहीं करेगा, right? Yeah, okay, it's constant volume process, and you just want the heat. So you know integration of PdV. Oh, sorry, not the work done. Just wanting that's equal to delta U, of course. What am I doing? So Q1 is just equal to right NCV times delta T is just T naught in this case. Or Q2 में क्या हो रहा है? Q2 is constant pressure, right? Okay. So what's the heat provided? It's yeah, it's just like NCP delta T because of course CP that should be the thing. अपने को चाहिए क्या है? Average molar heat capacity. So Q1 plus Q2 is going to be like N T naught times CV plus 2 CP और ये सब upon total change in temperature and moles as well. So moles and then 3 T naught I would say. तो ये गया just this much. So it's like degrees of freedom upon 2 plus okay so right CV में लिख सकते right. Whatever जल्दी करो उसको 2 times F upon 2 plus 1 right and all of that upon times R. Okay, this thing upon 3 I would yeah looks correct. तो ये क्या हो जाएगा just you know F plus F upon like okay 3 upon 2 F and that thing plus 2 and that upon 3 this times R. So अपने को F में चाहिए completely isn't that right? और F कितना है? F is 5. Cool. just put कर दो इसमें. It's like 15 upon 2 plus 2 and that whole thing upon 3. तो ये कितना हो जाएगा 4 it's like 19 upon 6 R which is B. Next question. Yeah. Let's go to 22. क्या पता कितना टाइम हुआ होगा hopefully 1 घंटे के ऊपर ना हुआ हो. 22 is a cylindrical tube of cross section area A has two airtight frictionless pistons at its two ends. The pistons are tied with straight piece of metal as shown. Okay, ये metal wire है. Cylindrical cross section area A. Okay, cube contains the cube. अच्छा ये tube होगा शायद. The tube contains a gas at pressure P naught and temperature T naught. If the temperature of gas is doubled, so ये metallic wire है, right? Okay. If the pressure of gas is doubled, sorry, temperature of gas is doubled. So of course pressure double हो जाएगा because volume is kind of constant, right? Then the tension in the wire is of course like 2 times of whatever it previously was. अच्छा कितना है, right? Okay. Tied to a straight metallic piece of wire. Okay, tube contains gas at pressure P naught and okay, temperature of the gas is double, pressure 2P naught हो जाएगा whatever. So 2P naught times area इतना टेंसाइल स्ट्रेस होने वाला था. What's the big deal about it? So D is the answer. ये क्या घटिया क्वेश्चन था. मुझे लगा तुम बहुत ही कुछ अलग पूछोगे, यंग्स मॉडुलस दे दोगे और स्ट्रेन निकालो और क्या क्या. छोड़ो. 23. An ideal gas mixture filled inside a balloon expands according to the relation PV power something is equal to the temperature inside the balloon is ideal gas mixture filled inside a balloon expands according to this relation, right? The temperature inside the balloon is and it's expanding, right? Of course. So TV is right. Okay, so we just want like dt upon dv or something. So volume से कैसे relation है अपना temperature का, right? It's going to be P and then you got V power negative 1 upon 3. So P is just, you know, K times V power 1 upon 3 or something. So if you volume increase or temperature should also increase. I guess that's going to make sense. So temperature is increasing, of course, right? Because ये law के according ऐसा होना चाहिए. Yeah, that's the thing. Next question. 24.
24 is an ideal gas at pressure P and volume V is expanded to volume 2V. Column 1 represents the process and column 2 represents the work done during that process. Okay. So V से 2V में गया, it's an ideal gas, whatever. So if it's isobaric, right? अपने को work चाहिए ना throughout. Okay, cool. It's isobaric. Then P times delta V, like okay, PV is the work done. So A का तो Q होने ही वाला है. A का Q. Okay, if it's isothermal, it's going to be PV natural log of 2, of course, right? So R is the thing. उसके बाद में C. If it is adiabatic, then it's kind of complicated. Okay, so फिर most likely P होगा, but चलो ठीक है. A Q कहाँ पर है? A लो में है, and then B R कौन से इसमें है? Right, so A is the answer और C का अपने आप ही हो जाएगा. या देखने की जरूरत भी नहीं है क्या है. 25th, right? Okay, come on. 2 moles of an ideal monatomic gas undergoes a cyclic process A, B, C, A as shown. The ratio of temperature at P and A is 2 moles of ideal gas, monatomic gas. Okay, so N कितना है 2, degrees of freedom कितने हैं? It's monatomic, so like it's gonna be 5. Okay, undergoes a cyclic process A, B, C, A. Ratio of temperature at B and A यहाँ पे एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या दिए, यहाँ पे वी नॉट है और यहाँ पे 6 डिग्री है. ओके, इट्स लाइक 3 पी नॉट, तो ये जो हाइट है इसका जस्ट 2 पी नॉट. तो राइट, एंड वी जस्ट वांट टेम्परेचर्स राइट एट बी एंड ए. तो इतनी पूरी प्रोसेस देने की जरूरत क्या थी आखिर, वॉट एवर, राइट. लाइक जब पी वर्सेस वी कॉन्स्टेंट दिया इन लोगों ने. ओके, इट्स इंटरेस्टिंग. ठीक है ना, कर सकते हैं. सो at A it's just got P naught. V naught is right upon हाँ ठीक है R, वो सब तुम कर लोगे. और B पे क्या है, सो प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 3 P naught. और व्हाट्स दी वॉल्यूम, सो इनिशियली V naught था प्लस इसमें ग्रेडियंट कितना है, tan of 3 is this square root 3. Oh god, 1 upon the gradient, so 1 upon square root 3. Yeah, and that times dy delta y whatever. So वो कितना है 2 P naught right. तो देखो ना ये चीज 2 P naught hence of course just 1 upon square root 3 of that thing. Sure. So wait, something's wrong about this. 1 upon square root 3, not like that. Okay. God, that angle 60 degree. मतलब what do I even make of this thing? Wait, ये सही नहीं लग रहा है. What is this? And अच्छा ये एंगल जो है that's 30 degree right? Okay, so 60 90 30 kind of triangle. This is weird. Let us assume कि इसमें जो वॉल्यूम है इसको अपन V बोल देते हैं. सो क्या है ये, राइट ओके 3P सॉरी 2P चेंज हुआ ना. सो 2P नॉट अपॉन V minus V naught. That's the slope for this guy. So it's proportional to tan 60 degrees. I know. और यहाँ पे क्योंकि वो पता नहीं कौन से स्केल में यूज कर रहे हैं. और BC में क्या हो रहा है, इट्स जस्ट once again just 2P naught and then upon क्या होगा ये 6 V naught right. 6 V naught minus V that is proportional to tan 30 degrees. Yeah, कर दो फिर डिवाइड इसको. So what you get, just get like 3 is equal to डिविजन करके 6 V naught up minus V upon V minus V naught right. Exactly. चलो कैलकुलेट करते हैं. 6 V naught minus V is just equal to 3V minus 3 V naught. So 9 V naught is equal to 4V. V is just equal to 9/4 of V naught. Okay, अब अपने को पता है क्या है. So that volume is just 9/4 of V naught. Is that right? I mean it must be. अपन ये पूरा कैलकुलेट किया. What else could be going wrong? Sure. So now what does that mean? कि टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ है. अगर यहाँ पे T नॉट था देन ओवर हियर इनका रेशियो को मल्टीप्लाई करो जिसका भी 27/4. So 27/4 T नॉट हो जाएगा राइट. So 27:4. B is the answer right. B to A. Cool. B is the answer. Next question. Next 26th. 26 is a diatomic gas of molecular weight 30 is filled in a container at 27 degrees Celsius. Okay, it is moving at a velocity something. If it suddenly stop, the rise in temperature of the gas is. Here diatomic gas of molecule weighs 30 gram per mole. Okay, filled in a container moving with velocity of something. Can it suddenly stop? तो
राइट, सो जो सारे अपने कोलिजन्स रह गए विद द वॉल, आई एम अज्यूमिंग वो सारे सारे इलास्टिक होने वाले. या I mean, what else could be the thing? So suddenly stop here. For that, you have to apply some kind of momentum on this thing, which is applied to collisions. And yeah, maybe सारे elastic collisions है. In that case, uh, oh god, this is kind of complicated, isn't it? Right, rising temperature is okay. So सारी सारी जो kinetic energy थी गैस molecules की, वो सारी अब इनके thermal energy में convert हो जाएगी, right? What else could be the thing? Yeah, I don't know. हीट प्रोड्यूस्ड, सो जो कंटेनर है वो कंडक्ट कर रहा है कुछ तो भी हीट ऐसा. ना लेट्स अज्यूम वो एडियाबेटिक है, देन इट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू दैट. श्योर. तो कितनी अपने को हीट चाहिए, अपने को राइस एनर्जी चाहिए वैसे भी. या सो कितनी हीट अपने को मिलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर इज द एनर्जी दैट वी गॉट, एंड अज्यूम इट्स एडियाबेटिक और वॉट एवर. या क्योंकि वो फास्ट हुआ, सो जस्ट से इट्स एडियाबेटिक. एंड दिस थिंग अपॉन the heat capacity, which is like n, its constant volume, isn't it? I guess we should agree that. So ncv, yeah, this will be our, yeah, of course, this is our temperature का change. तो ये कितना हो जाएगा, मास कितना है 30 ग्राम पर मोल. अरे यार ऐसा में कन्वर्ट करो, राइट. इन वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड. सो 30 ग्राम्स यानी कि 30 times 10 power negative 3 like 3 times 10 power power 2. These many kgs per mole, that's the mass, right? तो उसको सपोर्ट करेंगे हाफ ऑफ दिस गाय, मतलब कि 3/2 times 10 power negative 2, right? Then v square, which is 10 power 2, so that times 10 power 4, right? That's the energy upon, और ये कौन से यूनिट में, SI upon mole, right? पर मोल में रहेगा इसमें कहना कि. एंड n, क्या है ये डायटोमिक गैस, लोके 5/2, एंड देन यू गॉट r. सो n कितना है बाय द वे, n अपने को पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली. Oh god. Yeah, we don't know what n is. देखो वेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, वेलोसिटी दिया है. This is not looking good. Without moles, how can I do this? Oh, wait, what is this? Molecules weight 30 gram per mole. What? I think ये molecular, okay, sure. उसने सिर्फ वेट नहीं दिया, उसने मॉलिक्यूलर वेट दिया, वही तो, इसलिए तो वो पर मोल आ रहा है. सो हाँ, m upon n जो चीज है दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट, राइट. या दैट इज 30 ग्राम पर मोल. तो दैट इज वंस अगेन व्हाट वी कैलकुलेटेड, 3 times 10 power negative 2. फिर v स्क्वायर, दिस इज गोना बी व्हाट, वंस अगेन 10 power 4, और जस्ट c भी रहेगा यहाँ पे. सो 5/2 times r, एंड r इज लाइक 8.3 वॉट एवर, या जूल पर मोल, वो हो जाएगा अपने आप. दिस इज द थिंग. ये 1/1 कैंसिल हो जाएगा, इट्स लाइक 3 times ये चीज, इसको 8/2 ले सकते हैं, वॉट एवर. Yeah, 10 power 2 times 3/8.3, something like that. So अच्छा, r नहीं देना है कि अपने को, ठीक है, इसको r ही ले दो ना फिर instead of that. So there we go, like 3 times 10 power 300 upon r, which is not here. What, seriously? This is complicated. क्यों नहीं है, it must be, wait, अच्छा ये 5 है ना यहाँ पे, इसीलिए नहीं है, राइट. सो दिस इज जस्ट 3/5, ओके. 300 upon 5 कितना होगा, 60 upon r, which is a. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. बस 1 घंटे के ऊपर ना हुआ हो, 1 घंटे के ऊपर ना हुआ हो. 27th question is, three processes form a thermodynamic cycle as shown, okay, on PV diagram for ideal gas process. 1 to 2 takes place at constant temperature 300 Kelvin. 1 to 2 constant temperature. What? Doesn't look like that. PV must be, okay, it's kind of somewhat of hyperbola. ठीक है जो भी. 2 to 3 takes place at constant volume. Okay. During the process 40 joules of heat leaves the system. 2 to 3 में. Okay. 3 to 1 is adiabatic and constant temperature T3 is equal to something. Work done by the gas during the process 3 to 1 is. अच्छा, सो ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर है, राइट. ओके, इट्स एडियाबैटिक, मतलब कि जो वर्क डन है दैट्स इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी का चेंज. एंड सो 2 to 3 में क्या है, हीट कितनी है 40 जूल्स, और ये इनिशियली 300 केल्विन था, ये भी 300 केल्विन पे रहेगा, राइट. एंड ओके, हीट अपने को दी है, कांस्टेंट वॉल्यूम
Oh, heat is just basically like internal energy का change in this case. So इसमें internal energy कितनी change हुई? 40 जूल से, right? 1 to 2 में change ही नहीं हुई, और फिर अब 3 to 1 में negative 40 जूल से change होगी. But then इसमें heat तो है नहीं, yeah. ये constant volume था, इसमें work नहीं था, and heat ऐसी थी, right? इसमें heat नहीं है, so just the work done, that's going to be 40 joules, right? Work done by the gas, that is, right? That's going to be 40 joules. So C is the answer. Next question. By the gas is 40 joules. Wait a second. Heat leaves the system. Shit. इसमें negative 40 होगा. It should be positive 40 change in internal energy in this case. So it's doing positive 40, negative 40 work on surrounding, right? तो actually में A answer होगा. Ah God, ये almost mistake करने वाला था मैं. Leaves the system, not enters the system, right? N molecules of gas filled in the container at temperature T. If the gas is compressed slowly and isothermally to half of its initial volume, the work done by the atmosphere on the piston. N molecules of gas filled in a container, temperature T. Gas is compressed slowly and isothermally to half of its initial volume. ठीक है. The work done by the atmosphere on the piston. Sure. So you know that this nRT natural log of V2 upon V1, that is the work done by the gas. So उसका negative order natural log of V2 upon V1. It's going to be 1 upon 2 in this case, right? Because it's not isothermally, right? Yeah, sure. N molecules of gas, not N moles. Oh God. Let's go K use करना. Where's the Avogadro's constant and what not? N moles होने चाहिए, I guess. But ठीक है जो भी है. Half of its initial volume, the work done by the gas only. Of course, it's supposed to be this thing. It's constant temperature. That's how it's supposed to be. So it's just nRT natural log of 2, which is option D, where it's negative over here. Half of its initial volume. There is definitely work. It should be positive, of course. What? No, not nRT upon 2. That doesn't make any sense. Natural log of 2 minus 1 upon 2. What? Slowly and thermally to half of its initial volume. Piston is. Okay. Atmosphere on the piston. Of course. जो right atmosphere से right atmosphere का pressure तो same रहने वाला है ना, of course. So the work done by the piston, or sorry, work done by RT, work done by atmosphere on the piston, that's just the work done on the gas, right? Okay, plus wait, something's going wrong. Pressure constant, right? So P naught, and then just one delta V, so V naught upon 2, I would say. And P naught versus nRT. So nRT upon 2, that is the work done. Cool. So A is the answer. By the atmosphere बोला था ना? Right. That's why this thing. Total work done on the piston is going to be this thing, I guess. So C. Right. 29. और वो जो उसका negative work रहेगा वो अपने को provide करना है. 29. The molecules of an ideal gas have 6 degrees of freedom. Temperature of the gas is T. Average translational kinetic energy of its molecule is 3 upon 2 kT. Of course, ये ऐसी घटिया ट्रिक्स उसका मत चलाओ. थिंक करते थे लोग 6/2 RT, whatever. Next, in the given graph, the process EB is P versus V constant है. It's weird. Okay, AB. No, it's neither isothermal not adiabatic. No. Nope, none. D is the answer. 30 का answer D होगा. Okay, so that's it. Should I check? Maybe not. I'll see you guys in the next video. Bye.